We are gathered here today to discuss our upcoming event, CRIKC-CII Exhibition on Technologies from Academia. I would now like to request Professor Manu Sharma, Coordinator Technology Enabling Center, Punjab University, Chandigarh, to share the welcome note and to share the details of the upcoming event. Good morning, everyone. With great pleasure, I wish to share with everyone that on 12th November 2022, Technology Enabling Center, Panjab University, Chandigarh, in partnership with Confederation of Indian Industries, CII, and Chandigarh Administration, is organizing CRIKC-CII Exhibition. In this exhibition, academia of this region would be showcasing its technologies that it wants to sell to the industry. We hereby most cordially extend invitation to all members of CRIKC institutes for participation in this exhibition. We invite PGI Chandigarh, Punjab Engineering College, PEC, Indian Institute of Science and Education and Research, IISER Mohali, IIT Ropar, Institute of Microbial Technology, IMTech, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, NIPER, Central Scientific Instruments and Organization, CSIO, Institute of Nanoscience and Technology, INST, National Agri-Food Biotechnology Institute, NABI, Center of Innovative and Applied Bioprocessing, SIAP, National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITR, Terminal Ballistic Research Laboratory, TBRL, Snow and Avalanche Study Establishment, SASE, Government Medical College and Hospital, GMCH, CCET, Punjab State Council for Science and Technology, PSCST, Center for Development of Advanced Computing, CDEC, Defense Institute of High Altitude Research, Bihar, Semiconductor Laboratory, SCL, Center for Research in Rural and Industrial Development, CRRID, Rayat Bahara University, Chitkara University, Maharaja Agrawal University, Punjab University, Patiala, Desh Bhagat University, Mandi Govindgarh, Swami Vivekanand Group of Institutes, IIT Mandi. We hereby extend our most cordial invitation to all these institutes of this region to come forward on 12th November 2022, Saturday, and exhibit before industry the technologies which they have developed. Thank you. Thank you so much, Professor Manu Sharma. Now, I would like to request Mr. Jameel Bedi, LCII Punjab, to share his views. Thank you, ma'am. Very good afternoon to all present, worthy members of the press, Dr. P.J. Singh, our Vice Chairman of CII Punjab and CMD Tylenol Orthotics, Professor C.R. Suri, Chairman Management Committee of TEC, Professor Manu Sharma, Coordinator of TEC, Mr. Ankush Kavri, members of the press. CII, as you would be aware, is India's premier industry body, and we work closely with government on policy issues and enhancing efficiency, competitiveness, business opportunities for industry through a range of specialized services and global linkages. So education and technology is one of the key sectors where we work extensively. And when we talk of making our industry competitive and evolving as a knowledge-based industry and society, it is not possible without academia, universities and research institutes. If you look at the so-called Silicon Valleys, be it in US, California, or here in Bangalore, much of the development there has been possible because of the excellent research, academic and technology ecosystem that is present there. All the startups, the tech companies that are powering the growth today have mushroomed out of these centers. We all are aware that industry in Punjab and in this region has traditionally been dominated by MSMEs who rely on frugal engineering, what we call jugaad. Of late there has been quite a number of higher institutes like the list which Professor Sharma just read. They have come up in this region where the researchers have been undertaking research on some credible R&D. They are doing some amazing work, our researchers in this, both industry and academia, but they appear to be working in silos. So we feel that if the industry in this region has to remain competitive, it has, and the states of this region, their economy has to grow. It is imperative that institutions like Punjab University and CRIKC
they join hands with industry to ensure that whatever research is undertaken in our labs, their industrial and commercial potential is realized. So I leave my initial thoughts here and request our Vice Chairman of CII Punjab, Dr. PJ Singh, since he is someone who, and among very few in this region, who has successfully straddled, starting his career in academics and teaching, and then going on to set up his own company, which is a market leader and a brand in itself, to dwell on how we plan to undertake this journey forward. So thank you, and over to Dr. PJ Singh. Thank you, Mr. Junaid, for setting the context. Now I would like to request Dr. PJ Singh, Vice Chairman, CII Punjab, Chairman and Managing Director, Tyner Orthotics Private Limited, to brief us about the interface clubs and role of CII in the exhibition. So, dignitaries on the dais, members of the press, good afternoon to you all. See, what I feel is that technology in fact has shrunk the world, and we are competing in the same market. As a result, the industry from the developed nations, the industry from the developing nations, they all come together. And what we feel is that today, that if India has to become a world economic power, the industry has to be powered by the knowledge, the inventions, the innovations of the academia. So this is the background with which we are all sitting together. So on one hand, what I feel is that post-COVID, when world felt that China probably is arm twisting, after that it has become a world economic power based on their industrial growth, and most of the developed nations now are looking towards a China plus one policy. So India is one of those probables that will get a lot of business out of this whole geopolitical new strategies that the developed nations are aiming at. Now this is a great opportunity. This great opportunity has to be, in any case, realized by the Indian industry. So what I feel is that when we see this region, what we call as Chandigarh Punjab region, there are about 40 STEM institutes, as we call them, science, technology, engineering and mathematics institutes. Those who are doing absolutely a wonderful job, lot of innovations, world-class work is being done, lot of innovations, inventions, and lot of novelties are being produced on everyday basis. But what we find also is that lot of these technologies are still staying within the institutes. They are not getting commercialized. What I feel is the reason is that there is a lack of a formal bridge or a formal joint ventures, a formal system where all these technologies can be transferred to the industry. Once we have this kind of a formal joint venture participation of industry academia together, what we see is a lot of growth of the industry, lot of economic prosperity will come to this region. So for this, what we have done is, so we all sat together and we formed 10 interface clubs. So these interface clubs, we will give you the list of all these clubs, which includes light engineering, which includes medical devices, pharma, agriculture, which also includes the material science, which also includes softwares and artificial intelligence, also includes industry 4.0. There are so many others. So now these interface clubs will have actually two elements to it. One, the best scientists, the best academicians who have over the years proven themselves that they have developed so much processes, technologies on one hand, and on the other hand we are also bringing all those industries from the same domain. So domains, once they sit together from the industry side and from the academia side, there is a lot which will get churned out of it. There is a lot of brainstorming will happen. The industry will tell its problems. The academia already has so many technologies developed, so they will be transferred to the industry. So what we are actually aiming today is that in this whole process,
we have enlisted, apart from the clubs, the activities of the clubs. So first of all, we are going to enlist all the technologies and products which are developed by these institutes, then enlisting of the problems faced by the industry, then all the joint research projects, tech adoption projects, quality enhancement projects will be taken as part of these projects, as part of this club working. Then we will have monthly meetings, both virtual and in person, a quarterly newsletter for each club. Then we will also have industry specific hackathons. We will ensure industrial visits of the mentors and the students regularly. We will have a business plan of each club and we will have quarterly review for its achievement. So we will also ensure that there is an overall empowered committee which will act as a facilitator to solve any policy issues if we have, because we live in silos. Academic institutes have their own issues of kind of when they go towards commercialization of their technologies. So we think that all these issues have to be resolved on an urgent basis. So with this, I think this kind of an association, this kind of a partnership will get us a lot of industrial growth and a lot of economic prosperity to this area and to our nation. With this, I wish all this effort being done by the academic bigwigs and the industrial big industry mentors. So I wish all of them a great success in this whole thing. Thank you. Thank you, Dr. P.J. Singh, for sharing such valuable information with us. Now I would like to request Professor C.R. Suri, Chairman Management Committee of Technology Enabling Centre, Punjab University, to share mandate of tech and role of tech in the exhibition. Thank you. First of all, good afternoon to all dear friends. Warm welcome to this today's session. As we are lucky to have Professor Singh as our partner, because the CIA is the voice of industry. They are putting all the efforts, basically whatever is being done in any academia or any institutions. Ultimate objective is to come to the industry, and CIA is playing such a wonderful role. As we know, for the last few years, India, there is a paradigm shift in R&D output, particularly in the area of IPR, generation, publication, technology development. Yes, these are all very important for any growth of any country, for the economy, development of economy of the country. So India is now witnessing a very big shift in this direction. For this, the academia is the major knowledge resource. The knowledge resource, whatever basically is being developed in academia, ultimately industry take that all over the world. This is the scenario, and ultimately it comes into the form of the products. As we know, there are more than 1,000 universities, more than that, 250 R&D institutions. All are doing excellent work in terms of the particular R&D output. Now and now, more for a few years, this output is mainly in the form of the technology. But somehow they are having the ineffective mechanism in the institutions. There were some gap between how this technology, whatever is being available or developed at the institution level, they are not seeing the light of face to the not transforming to the industry. So the Technology Enabling Center came into to bridge the gap between these two. So Punjab Department of Science Technology established, there are 5 or 6 regional technology enabling center all over India. The mandate was whatever technology available in institutions level or academic level or some even the industry level, it should go to the industry. So that was the mandate of the DST's Technology Enabling Center, and we were lucky enough to that DST thought Punjab region, Punjab University was selected. As you know, the Punjab is also coming up very fast in industrialization. We have all type of industry nearby. One way we have a very big pharma hub in Baddi. Another, we used to have a very big, now also a medical or analytical device in Ambala, and Ludhiana is a textile hub. So this was a very big, all three Chandigarh dimension and direction, they were an industrial hub. Unfortunately, as Professor Singh has just mentioned,
that we have more than 40 research institutions and academic institutions as well as research institutions of the national level or center of excellence. So there were very big scope to come together and make a very big ecosystem. So that was the mandate of the Technology Enablement Center. So in this Enablement Center, we are now seriously taking how this technology, whatever available, what is the level of technology in terms of their level of up to the technology commercialization, what is the basically available mining of the technology, whatever available in institutions. Even our Technology Enablement Center is helping in terms of the technology which is available to generate in the pilot scale or manufacturing scale with the institutions which are having this facility. Also, we are helping, our Technology Enablement Center is also helping the licensing of this technology to that level. So this is a very big ecosystem what TEC, Technology Enablement Center, is making for helping industry of this region to come up how basically this available, whatever the technology available in and around institutions, so that their problem of getting from abroad or technology from abroad can be basically resolved. So this is one of the mandate what basically successfully Technology Enablement Center for the last 2 years has successfully resolved. And now this exhibition, what this in next 12th of this month, next month we are going to organize, will make another milestone in form of the industry will come together, academia will come here to display or showcase their technologies, and industry may talk hand to hand, face to face with them, or if they have some problem, they can, whatever the academia, whoever will be expert will be coming, they can discuss with them. So this is what our mandate of our Technology Enablement Center in Chandigarh region, and then I once again welcome you all for today's occasion, so that with your help, our Technology Enablement Center can have high popularity and also bring more and more people into our group. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your views with us. Now, I would like to request Engineer Ankush Gavi to brief us about the registration process for the event. Thank you, Simon. Good afternoon, everybody, and warm welcome. So, academicians or researchers or scientists who wish to participate in this exhibition, they need to book a stall and register the technology to be exhibited. If some scientists have developed more than one technology, then he or she can display all these technologies on one stall, but need to register all the technologies separately. So the stall charges are very nominal, that is rupees 10,000, and to register he or she need to fill an online form. The link for the online form is given on the brochure, and this brochure can be downloaded from the official website of Technology Enablement Center, that is www.tecpu.in. So basically the last date for registration is 30th October. So by 31st of October we'll have a good idea of the technologies that will be exhibited in the exhibition. So based on these registered technologies, we'll invite the specific industries to which these technologies can be of great interest, and maximum tech transfers can happen. So I would like to give a brief of this registration form. There are basically 6 sections. First section is all about the details of this exhibition and what amenities they will get in the stall. Second section is of the basic details like the name, institute, department, and designation of the exhibitor. And third section is the detail about the technology which he or she will exhibit, like the title of the technology readiness level, and the target industry sector to which this technology caters. And after that, if the next section is about the patent details, if the technology is patented or not patented, and if patented, the details of the patent. And last section is if there is a special requirement to display that technology. And final sixth section is the fee details. So the team of Technology Enabling Center, Dr. Vaibhav, Dr. Dinesh, Engineer Simarpreet, Mr. Avikash, Ms. Devinder Kaur will leave no stone unturned to make this event successful.
And here I would like to share that a group of students is also helping and assisting to organize this event. Thank you. रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स के लिए कोई छूट है? Yes, ma'am. We are providing 2 stalls to research scholars and students. रजिस्ट्रेशन के लिए फीस में कोई? No, उनके लिए totally free of cost है. 2 stalls हमने उसमें रखे हुए हैं. Only 2 stalls. Yes. और कितनी इंडस्ट्री के साथ आपकी बातचीत हुई है जो आएंगी यहाँ पे अभी तक, या कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? बिकॉज मुझे लगता है ये प्रोसेस तो बहुत दिनों से चल रहा है आपका. मैम बेसिकली अभी तक 2 स्टॉल्स रजिस्टर हो चुके हैं, 2 स्टॉल्स बुक हो चुके हैं. And there are so many queries like 20 to 25 queries are there. बिकॉज ये दीपावली की छुट्टियां चल रही थी और जो इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम ये है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ है और बाय एंड ऑफ दिस वीक वी आर होपिंग द मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस एंड हमें होप है कि हम 20 to 25 स्टॉल्स एग्जिबिट कर पाएंगे. और इसके अलावा इसके अलावा हम जो आपका नेक्स्ट क्वेरी है इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत, तो वो हमारा प्लान यही है कि सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज जब बाय 31 ऑफ अक्टूबर कंपाइल हो जाएगी तो हम उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को इनवाइट भेजेंगे. CII विल प्ले अ की रोल हियर. तो जो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजीज की लिस्ट है वो जो जिस इंडस्ट्री सेक्टर को कैटर करेंगे उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा. क्रिक इंस्टीट्यूट्स को आपने ईमेल वगैरह कोई ऑफिशियल मेल भी भेजी है या आप इसी तरीके से बस? नहीं मैम, हमने ऑफिशियल ईमेल्स और उनके डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स को एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर जा चुका है फ्रॉम. As she said, every time such kind of initiative has been taken by the industry as well academia. CRIK formation is based on these grounds. लेकिन उसके बावजूद भी एक तो चीज मुझे ये बताएंगे कि कितना अभी तक जो है हम, क्योंकि कोर्सेज भी डिपार्टमेंट्स के अब इंडस्ट्री के साथ मिलकर तय करने की बातचीत क्रिक की फॉर्मेशन के बाद हुई थी, क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे बढ़े हैं या कि सिर्फ हम अभी इन्हीं लेवल पे घूम रहे हैं? लेट मी आंसर दिस. सी, पहले जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए वो ना एक जनरल इंडस्ट्री और जनरल एकेडेमिया की तरफ से था. एकेडेमिया ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज वन यूनिट, इंडस्ट्री वाज द अदर यूनिट. लेकिन इस बार इनिशिएटिव में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस लाइज इन दैट वी हैव नाउ डिवाइडेड द होल जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इनटू 10 डोमेन्स, राइट. तो 10 इंडस्ट्री डोमेन्स जो जिसके नाम मैंने अभी बताए थे. अब क्या है कि देयर इज वन सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर लेट्स से लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो उधर से इंडस्ट्री मेंबर भी वही आ रहे हैं और एकेडमिक साइंटिस्ट कम्युनिटी भी वही आ रही है. नाउ ओनली द लाइट इंजीनियरिंग पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर बोथ साइड्स. सो अभी क्या हो रहा है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर गोइंग टू हैपन. This is what was needed and which was missing earlier has been now bridged. जिससे अभी क्या है कि आउटपुट रिजल्ट आने की उम्मीद है. और इसमें पहले कभी मैंने इतनी एक्साइटमेंट इंडस्ट्री की तरफ से नहीं देखी थी. CII represents CII which is an industry body and I think that this is the first time that we see a lot of excitement from the industry side because they have to compete against the best in the world. Today they want that the knowledge which by and large is lying on the academic and the research institute side will be available to them. उनको ज़रूरत है, इधर रेडी पड़ी है. सिर्फ एक ब्रिज की ज़रूरत थी. जो ब्रिज था हमेशा जब बना वो इतना शायद इंटेलिजेंटली शायद स्पेसिफिकली नहीं बना था पहले जो अभी बना है. CII तो एक मीडिएटर हो गया, उसके अलावा एकेडमिशियन जो है ये बैठे हैं यहाँ पे, उसमें हमने एक क्या ऐसी कोई कसरत करी है जिसमें कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि हम इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके ऊपर काम किया हो कि हमारे जो भी अलग अलग फील्ड के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर काम किया हो? देखो मैं आपको बताता हूँ. पहले तो इनलिस्ट हुई सारी टेक्नोलॉजीज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, विच आर रेडी टू बी ट्रांसफर्ड. पहले कभी इस तरह से लिस्ट नहीं बनी, राइट. दूसरा है जब ये क्लब्स बने तो इंडस्ट्री की लिस्ट बनी कि जिसको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेसिफिक है, अभी जनरल नहीं है. पहले क्या होता था, मैं लेट्स से मेडिकल डिवाइस से हूँ, मेरे को लिस्ट किसकी आ रही है, एग्री लाइट इंजीनियरिंग की या तरह तरह की टेक्नोलॉजीज की लिस्ट आ रही है. अच्छा मैं पढ़ता था 200 टेक्नोलॉजीज हैं बट मेरे काम की शायद कोई भी नहीं है.
पर अभी क्या है, मेरे पास सिर्फ 2 ही टेक्नोलॉजीज ऑफर हो रही हैं जो एग्जैक्टली जो मैं अभी काम कर रहा हूँ। अभी क्या है कि द इंटरेस्ट इज वेरी डिफरेंट, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी रेडी पड़ी है। सेकंड क्या है कि साइंटिस्ट किस डोमेन में काम कर रहे हैं, अब वो मेरे को पता चल रहा है कि दीज आर लेट्स से 20 साइंटिस्ट जो मेरी डोमेन में काम कर रहे हैं, चाहे मेरी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जो मेरे को चाहिए, फिर भी ये डोमेन मेरा है। तो अब मैं जब उस क्लब में बैठ के उनसे बातचीत करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, मेरी कमर्शियल नीड क्या है, मेरी मार्केट की नीड क्या है, सो आई नो दीज आर नॉलेजेबल पीपल सिटिंग एंड दे वांट टू वर्क फॉर मी। तो अब क्या हुआ कि अब हमारी बातचीत जो है ना वो एक लेवल पे हो रही है, करेक्ट। तो अब दोनों तरफ से लग रहा है कि यस दे हैव व्हाट दे आर ऑफरिंग, इंडस्ट्री नीड्स इट, और इंडस्ट्री के सामने बैठा बंदा जो उनके लिए भगवान जैसे है क्योंकि उनके पास वो नॉलेज पड़ी है। तो आप समझ रहे, तो इसकी वजह से सक्सेस की जो गारंटी है इस प्रोग्राम में। मैं वो आपकी बात सही है। अभी जैसे इंडस्ट्री और एकेडमिशियन मिलके आपस में सिलेबस तय कर रहे हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स आर देयर, इंडस्ट्री को बुला रहे हैं और उनके मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सिलेबस भी तय कर रहे हैं कि वी नीड दिस काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उसमें मेरा सवाल ये है कि क्या हम सक्सेसफुल हुए हैं पहले या नहीं हुए। सर उस डिपार्टमेंट से हैं, यूआईटी से, तो मैं ज़्यादा इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो कोशिश शुरू हुई है पिछले 8-10 साल से चल रही है, ये जो चीज़ ये बार बार आप बोल रहे हो, ये प्रैक्टिस ऑलरेडी डिफरेंस है जो मैं एक तो सक्सेस रेट पहले कम था। प्लेटफॉर्म वाली बात सही है कि वो प्लेटफॉर्म सीआईआई का प्लेटफॉर्म दैट इज अ बिग ग्राउंड, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है और सीआईआई कर सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है वो काफी देर से चल रही है। लेट प्रोफेसर मनु शर्मा आंसर दैट इन स्पेसिफिक इफ यू वांट टू आस्क। तो जैसा कि इस पहल की अगर हम बात करें, इस पहल में इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों एक साथ मिल के एक योजना तैयार कर रहे हैं। तो इस योजना को मुझे लगता है ये योजना पहले की योजनाओं से उस हिसाब से बेटर होगी, तो ये उसमें प्लस पॉइंट है। और जो पहले हम अपनी कोशिशें करते रहे हैं, तो मुझे लगता है उन सारी तमाम कोशिशों का ही एक रिज़ल्ट है कि आज हम CII के वाइस चेयरमैन को आज यहाँ बुला पाए हैं और उनके साथ बैठे हैं, और दाहिनी तरफ जो CII के जो पंजाब स्टेट के हेड हैं वो बैठे हैं। तो उन सब कोशिशों का भी एक तरह से ये रिज़ल्ट है। और ये काम मतलब इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी मेहनत है इसमें, तो धीरे धीरे हम I would like to add in this, basically आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है बेसिकली कि जो पहले था वो सक्सेस रेट कम था, बट ऐसा नहीं था कि सक्सेस है ही नहीं। जो UIPS है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वहाँ से 4 से 5 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं जो इंडस्ट्री को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर नवीन गुप्ता एंड प्रोफेसर प्रिंस शर्मा इज ऑलरेडी देयर। सो इन्होंने अपनी 3 से 4 टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर की है। सो अभी रिसेंटली एक MOU हुआ, सर प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। उसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे अभी इन्होंने बताया UIPS का, एक सोराइसिस का प्रोडक्ट निकला था। UIPS सोराइसिस एक बीमारी है, उसका प्रोडक्ट उन्होंने लोशन निकाला, ट्यूब। तो वो मुझे ही नहीं पता उसका क्या सक्सेस रेट क्या रहा है, मार्केट जब उसको किया गया वो मार्केट के अंदर चला या नहीं चला। जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं यहाँ पे एकेडमिशियन से इंडस्ट्री के पास, क्या वो आगे बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी, ये जवाब आप दे पाओगे, मुझे नहीं मालूम। ये जो आपका काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं इसमें कि कुछ हो नहीं रहा है, आदर्श से बात कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं सारे, वी आर रिप्रेजेंटिंग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं आपको एक डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सिटी को। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से ऑलरेडी 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मार्केट में है इस वक्त। आप चाहें तो मैं उसको आपको पूरी दिखाऊंगा। एक USA में है, एक इंडिया में कैडला कंपनी में, जो कि मार्केट में है इस वक्त, जो उनका पूरा सेल हो रही है। जो NED न्यू इंग्लैंड बायोलैब्स USA में है, वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बिक रहा है हमारा। नंबर आप जो आते हैं नेक्स्ट पे, अभी हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए लॉरियल पेरिस चल के हमारे पास आया है, पंजाब यूनिवर्सिटी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की, हमारे को आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने एक इको फ्रेंडली एंजाइम बेस्ड हेयर डाई फॉर्मुलेशन रेडी की है, जिसको कि वो टेस्ट करना चाहते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड।
उनके साइंटिस्ट चेक करना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ MOA हो रहा है, जिसमें कि वो सिर्फ सैंपल लेने के ही पहले हमारे को पैसे दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये चेक करेंगे, सारी सैम्पलिंग करेंगे, और उसके बाद वो अगर उनको पसंद आ गया तो देन इट विल बी ए मल्टी-मिलियन टेक्नोलॉजी एक्चुअली विच विल बी सोल्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉरियल इज नॉट ए स्मॉल कंपनी। इससे बड़ी कंपनी कौन सी होगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास चल के आई है? आप बताइए मेरे को, इससे बड़ी कंपनी कौन सी होगी? नंबर 2, पनेशिया बायोटेक है, उनको पता चला माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वैक्सीन पे काम हो रहा है, वो हमारे पास चल के आ रहे हैं कि हमें आपके साथ MOU करना है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे हमने एक वैक्सीन बनानी है, तो आप इस पे काम कर रहे हो कि वी वांट टू डू दैट, कंपनी चल के आ रही है। एंड देयर इज ए थर्ड कंपनी, ट्राइडेंट कंपनी, जो पल्प एंड पेपर मिल्स हैं जिनकी, वो हमारे पास खुद चल के आए, उनके जो CEO हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे को इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ये सब तब अब हो रहा है कि पहले भी टेक्नोलॉजी होती थी लेकिन इक्का दुक्का यहाँ कहीं होती थी, लेकिन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स टेक डिपार्टमेंट ने आके इसको बहुत अपग्रेड किया सारा चीज। इंडस्ट्री के साथ जो लाइसेंस बना है, इंडस्ट्री के साथ जो सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ये टेक का DST के प्रोग्राम्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और PJ सिंह जी जब से आए हैं, and he has given a real boost to that, and जो हम लोग बड़ा एक इनहिबिशंस में रहते थे ना, अब हम खुल के सामने आ रहे हैं इंडस्ट्री के साथ कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ये लॉरियल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको नवीन लगता है, ये और बताएंगे इसके बारे में। मैं जैसे वही डॉक्टर प्रिंस ने कहा, एफर्ट्स ऑलरेडी फ्रूट हैव स्टार्टेड गिरी, PJ सिंह जी ने टेक ने मिलके दो, जैसे डॉक्टर प्रिंस ने बोला, ट्राइडेंट के साथ ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद देम। लॉरियल वाला हमने एक केमिकल फ्री हेयर डाई बनाई है, विच विल बी टोटली केमिकल फ्री। इट हैज शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। उनके कंपनी वाले साइंटिस्ट आए हमारे पास, इट हैज वर्कड वेरी वेल। नाउ एज ही हैज टोल्ड, दे विल बी टेस्टिंग आवर सैंपल्स ग्लोबली, but if it works out, which we are almost very sure, because even in their scientists had it worked in our laboratory, so that sort of process had started. So it will change the whole process of this type of chemical based product. Like this, number of things are being happened, and all this is because of the quick efforts taken by PJ Singh ji, TAC, Panjab University, and I will say CRIKC. Everybody's joint effort is there, because of which we are. अभी तक क्या होता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट अपने हिसाब से रिसर्च करता था, फिर वो कहता था मेरी टेक्नोलॉजी मेरे से ले लो, इंडस्ट्री कहती थी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री कह रही है मेरे को ये चाहिए, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट आर रियली गोइंग इनटू दैट कि यस हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंडस्ट्री इसमें आपकी फाइनेंशियल हेल्प करती है कुछ? इंडस्ट्री नहीं करती, हमें खुद जनरेट करना पड़ता है। इंडस्ट्री अभी तक फाइनेंशियल हेल्प में बहुत कम आ रही है, वो चाहती है कि हमें प्रोडक्ट बनाए दो, हम उसको मार्केटिंग करें, लेकिन मार्केट रेडी प्रोडक्ट। ये हमें कॉस्मेटिक वाली कंपनी हमें पंजाब यूनिवर्सिटी को पैसे दे रही है फॉर सैंपल्स एंड ऑल दैट, ऑलरेडी MOU हो गया, उससे पैसे आ रहे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट जो इनका ट्राइडेंट वाला प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो इन्होंने मनु शर्मा जी ने हमसे पहले लिस्ट शेयर की थी ऑफ ऑल द पेटेंट्स दैट पंजाब यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वी हैड सेंट इट टू ऑल आवर मेंबर कंपनीज। तो CII became very instrumental in that. So उसमें से वो मेल डॉक्टर मिस्टर दीपक नंदा जिन्होंने आपने, so he called us up that I want to meet such this professor virtual. So we shared the contact. So that is how CII is. I will like to add, even the scientists are very enthusiastic and thankful to CII, PJ Singh ji and Manjit people like Muni ji. So now we are इतनी जल्दी हमारा कोई कांटेक्ट करवाया, so we are also becoming little proactive, which we have not seen earlier. That's एक चीज जो आपने पूछा था ना कि कुछ नहीं हुआ, क्रिक में भी इधर उधर घूम रहा है, इज नॉट ट्रू। रादर अगर आप देखें कि क्रिक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो दैट वाज टू ब्रिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस रीजन टुगेदर, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नॉट इंडस्ट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज एनी साइंस, बेसिक साइंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक इकोसिस्टम बना और उसमें काफ़ी कुछ हुआ था, बिकॉज आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट व्हेन इट स्टार्टेड, मी, रुपेंद्र तिवारी एंड देन कपूर साहब ऑफ CSIO डायरेक्टर, वी थ्री सेट ऑन हिज रूम इन 2011। तब ये इसकी जब सीडिंग हुआ था, उसके बाद काफ़ी वी केम टुगेदर, प्रिंस एंड वी वर्क टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस क्रिक इनिशिएशन ओनली। तो हम लोग एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे, देन वी केम ISC में क्या हो रहा है, PU में क्या हो रहा है, उसमें नॉलेज शेयरिंग हो रहा था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग होता था, उसमें इवन जॉइंट स्टूडेंट का शेयरिंग होता था।
तो दैट वाज ए बेस फॉर द रनिंग इंडस्ट्री के लिए, जो एक बेस तैयार हुआ। पीयूटेक का जो मेजर, जो मैंने आपको बताया मैंडेट है कि टेक्नोलॉजी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, व्हाटएवर मैंने जैसे पहले बताया कि सारी इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ आउटपुट आया हुआ है। डॉक्टर प्रिंस ने बताया 2-3, इमटेक में आप देखिए तो 20-22 टेक्नोलॉजी अभी भी पड़ी है शेल्फ में, बट मैकेनिज्म नहीं है इस टाइप का कि उसको कैसे उसको कमर्शलाइजेशन की स्टेज पर लाया जाए। पीयूटेक इज प्लेइंग सच ए वंडरफुल रोल टू ब्रिंग ऑल दिस इंस्टीट्यूशन टुगेदर सो दैट जो टेक्नोलॉजी इनेबल जहाँ पर अंडर द शेल्फ पड़ी है वो दोबारा आके इंडस्ट्री के साथ हमारे साथ आके जुड़ जाए। तो दैट वाज द मेजर मैंडेट ऑफ द पीयूटेक। एंड पीयूटेक का जो ये रोल है, CII के आने के बाद मल्टीफोल्ड इसमें इंक्रीज हुआ। अब CII की जो अपनी वे ऑफ, जैसे मैंने बताया, वॉइस ऑफ इंडस्ट्री है, वो अपना पूरा का पूरा विजन उसमें डाल के हमारे साथ जुड़ के हैंड टू हैंड चेकिंग करके उसको आगे लेके जा रहे हैं। सो दिस इज डिफरेंट मैंडेट। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। देखो मैं ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਕੈਡਮੀਆ, ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ 2% CSR ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 12-13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ CSR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਫਰਮ ਨਾਓ ਔਨਵਰਡਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫॉर द रिसर्च। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। दूजी गल रही कि बहुत सारा काम हैगा जिहड़ा इंडस्ट्री ने आप करना है तो एकेडमिया ने आप करना है, तो जिहड़ा चैनल जिहड़ा मिसिंग सी कि इत्थे बहुत सारा चंगा काम एकेडमिक्स साइंटिस्ट करके बैठे सी ते इधर ट्रांसफर नहीं हो रहा सी, कमर्शलाइज नहीं हो रहा सी, वो हो जाएगा। बट मैं फिर भी तुहानूं ये दसदा कि जिहड़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कित्थे इंडिया का 144वां नंबर सी, हुण 66वां नंबर हो गया, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲੋ 30 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਬਿਲੋ 30 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DPIIT ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 66 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। तो ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡਸ। ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। क्या इंडस्ट्री का इस पासे है भी, क्योंकि पराली वैल्यूएबल बड़ी है, कई प्लांट लगे हुए हैं पंजाब च, क्या ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਵਰਬੀਓਸ ਕਰਕੇ। ਵਰਬੀਓਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਬੀਓਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਬਾਇਓ CNG, ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਸ, ਕੌਲੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर दैट ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
फिर उस तो बाद जी बॉयलर्स की बची हुई राख हैगी उन्होंने फिर रीयूज़ करिए, तो जी ये नवी पॉलिसी आई है ये बहुत फायदा होएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जी सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है कि पराली नूं आपां विच ही दबा दीए, इट फॉर्म्स द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सॉइल। तो जी मेरा ख्याल एफर्ट्स जिहड़ियां शुरू होईयां ने हुण वो विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स पराली की प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी के जोड़े साइंटिस्ट ने वो काम कर रहे हैं। वन ऑफ दैम इज डॉक्टर बजाज, वन एक पैक के हैगे ने जोड़े उहदे ते काम कर रहे हैं। सो क्रिक्स दे विच काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने जोड़े वो पराली ते काम कर रहे हैं। So major was which IIT Ropar which Professor Narendra Singh ने what the class has contacted him, उन्होंने उस पे काफ़ी काम किया है। He has made a very compressed film of the parali and then make for the substitute of the means by mixing of this plastic along with some 30% or 40%. He has already demonstrated to the class. So this political scenario ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ interdependent, there are so many things which are interdependent. Like if you take the case of this Mohali airport, Mohali airport को शुरू करवाने के लिए जद्दोजहद पंजाब, हरियाणा और रीजन के सारे लोग बहुत देर से कर चुके हैं, सरकारें भी कर चुकी हैं, लेकिन वही पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस रहती है कि दिल्ली का एयरपोर्ट जो है इससे किसी भी कीमत पे पीछे नहीं रहने देना, और वो केस आज तक हाई कोर्ट में चल रहे हैं लेकिन अभी भी शुरू नहीं हो पाया। इंटरनेशनल फ्लाइट एक आधी कोई चलती है, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ हो चुका, 7 स्टेटें उससे फायदा उठा सकती हैं। लोगों का करोड़ों रुपया जो है खराब हो जाता है, सवेरे चलते हैं और शाम के टाइम वो वहां पहुंचते हैं, जाके पेट्रोल भी खर्च होता है, डीजल भी खर्च होता है और सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बावजूद उसके लेकिन वो एयरपोर्ट आज तक नहीं शुरू हो पाया। इट इज अ वेरी सैड पार्ट, हालांकि आज का मुद्दे का पार्ट नहीं है, बट आई टेल यू मैं सर इंडस्ट्री और मैं आपको जब आपके प्रोडक्ट्स आएंगे इंडस्ट्री डेवलप करेगी, उसके बिना डेवलप हो ही नहीं सकती। अगर जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू नहीं होता अच्छी तरह से, इंडस्ट्री यहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। सो वी एक्चुअली वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वी मेट मोदी जी पर्सनली so as to press upon this. Then we met Mr. Hardeep Puri in the same instance, and they have assured us this is what we are talking of the center. Even we have talked to our own CM Saab, and he also has assured. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ GMR ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ ਲਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ। ਸੋ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। One is the private companies, second is the center, and third is the state government. ਇਹ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੈ। डॉक्टर पीजे सिंह जी ने कहा भी योर हेल्प इज नीडेड इन ऑल दिस रिगार्ड इन अ बिग वे। छोटी जी गल जिवें साडी ये हेयर डाई वाली है, इट वाज पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़ बाय दैनिक भास्कर नन्नू मैडम ने। From there it traveled to company and traveled visited us, so you people can play a big role in solving all these problems। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ CSR ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ CSR ਰੂਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CSR ਦੇਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਹੈ। Now concluding the session, I would like to request Dr. S. Weber to share a vote of thanks with us. Thank you, ma'am. It has been such an honor to be the part of this event, the press conference, and present the vote of thanks on the behalf of DST Tech Punjab University
I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, Mr. Jagmeet Bedi, Head CII Punjab State, Dr. PJ Singh, Vice Chairman CII Punjab State, Professor C.R. Suri, Chairman Management Committee of DST Tech, Professor Manu Sharma, Coordinator DST Tech, Engineer Ankush Gauri, Senior Manager DST Tech. Sincere thanks to the professors and academicians, those are present here, to the volunteers of CRIKC-CII Exhibition and the whole DST team. A wide round of applause and thanks to all the media persons who had attended this press conference on a very short notice. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us making this event a grand success. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Bharat. I would also request all the persons to have lunch with us.